अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज मेरे साथ कश्मीर की एक दिलकश पर्सनालिटी मौजूद है। केवीआईबी की चेयरपर्सन है हिना भट्ट। थैंक यू सो मच जो आपने टाइम निकाला मेरे लिए। सो मच। केवीआईबी एक वो तंजीम है जो विलेज इंडस्ट्रीज की एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। प्लानिंग से लेकर फाइनेंसिंग स्टेज तक हर एक चीज हैंडल करने के लिए केवीआईबी को सेटअप किया गया। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के द्वारा केवीआईबी ने कितनी यूनिट सेटअप की हैं 370 के एब्रोगेशन के बाद? Till date, since 2018 and 19, till date, we have 36,618 units, 36,618 units, which are successfully running. It's not only in the rural area. Since 2 years now, it is in urban area also. We have started working in urban areas because this is very important for the audience to know that we are working in the urban area. For the first time, Government of India has given an approval for PMEGP to work in urban areas also, especially for Jammu and Kashmir. मैम, ये हमने सुना है कि अब केवीआईबी जो अपना रुख है वो अर्बन की तरफ भी कर रहा है और सिटी टांगा का हमने सुना है. Is that one of the schemes that you're empowering? City Tangas at the boulevard and around Dal Lake? They are the well-educated 3 boys who wanted to start up something and earn their bread and butter. So they came up with this beautiful idea, Tanga, which was absolutely gone from Kashmir and beautiful mountains one side and Dal Lake on the other side. Yes. So it's a beautiful idea for the tourists. And as we all know, since 2 years, crores of tourists have been flowing and there's unprecedented. No place. Yes, totally. So it's one of the beautiful idea which has come up, and we supported them, and they're doing it wonderfully. जी, आपने मेंशन किया 36,000 प्लस यूनिट्स जो सेटअप हुए हैं. कैन यू गिव अस अ रफ आइडिया कि जस्ट टू हैव एन आइडिया कि आजकल का यूथ, कश्मीरी यूथ कौन सी बिजनेस की तरफ आकर्षित हो रहा है? इज इट हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर? That we give up to 50 lakh. We give for manufacturing, 35% subsidy, 20 lakh for service sector, 35% subsidy. It is the choice, decision for the beneficiary. Whatever unit they want to establish, which stream they are interested, we support them. It's nothing particular, one particular service or manufacturing unit they are putting up. I can say so many furniture manufacturing. For the first time, we have modular kitchen. So many girls and boys, they're running their salons and gyms, small restaurants. Take up anything, bakery units, garment manufacturing units, we have steel manufacturing units. And since 2 years, we have changed it from 25, earlier it was 25 lakh manufacturing unit. Now, since we have escalated it to 50 lakh, lot more, I can see applications are with very nice new ideas. Even I am aware कि बहुत अच्छी आइडियाज लेकर आज का युवा सामने आया है. मैं खुद पर्सनली किसी को जानती हूँ जो अपना खुद का चॉकलेट फर्म उसने स्टार्ट किया. शी मेक्स चॉकलेट्स एट होम, होममेड चॉकलेट फर्म. देन देयर इज अ लेडी who's made a lot of money. She became an entrepreneur and she's selling frozen foods. So whatever they decide, they come up with an idea. And full support. KVIB is there to support. Yeah, so there's no limitations on the choice of. You have homestays. You have small guest houses. Name a thing. Horticulture, dairy, sheep farm. We have other departments also. They support them, like horticulture, high density. There are better schemes with horticulture also. But we have upfront money. It's a quick, within 45 days. Okay. We have REGP scheme, that is Rural Employment Generation Program, which we started looking at the topography, climate, and understanding what is in the negative list of PMEGP. Like earlier, dairy, sheep, poultry, it never came in PMEGP. Financial assistance for Shikara people, financial assistance for cab drivers or tourist guide. They can
start up with getting one Innova and take all the tourists around. So it is the idea that what is needed in Jammu and Kashmir, REGP is for them. For them. But for that, we have kept little qualification. But PMEGP is paperless, educated, uneducated youth, no age bar. Even like people try for the government jobs till 40. And when they don't get, they can They don't always get. resort to business, and then KVIB is there to help them. Even we have a special focus and a thrust on ex-servicemen. They are coming up, taking up these schemes. So it's for everybody. लेकिन सक्सेस रेट क्या है मैम? बिकॉज जो युवा हैं वो कहते हैं कि उनकी एप्लीकेशंस कई साल पहले दी गई थी और उनकी अर्जियां अभी तक रद्द पड़ी हुई हैं, फॉरवर्ड नहीं हो रही है, या तो ये होता है, या तो फिर अगर केवीआईबी की तरफ से अगर अप्रूवल भी मिल जाता है तो वहां दूसरी तरफ जो बैंक्स हैं बहुत उन्होंने टफ कर दिया है लोन का प्रोसीजर. We have made it simple, transparent, without nepotism. Earlier, it was like there was no accountability on the funds which were given. No accountability on the subsidy given when, wherever and whoever. Now, there are guidelines from the RBI, from the ministry, from the KVIB. Without coming to that level of guidelines, we can't. You can't entertain. Neither bank can entertain. They can't take that risk. CIBIL score has to be there, proper. Beneficiary should not have availed any other scheme. They should have been like, the first scheme they are availing it. Defaulter for the bank. And the documents required are important to be submitted. Most of the times people think we're getting subsidy, we just have to go collect money and utilize in some other मतलब activity. हाँ डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं लेकिन पैसे लेकर फिर कुछ और Most of the times I have seen that they have been taking, previously it would happen, they would take money and they would construct something else. Yes. But that has stopped. We have on every step we have check and balance, we have accountability. As I said, documents are very important. A lot of people fail to do that. Kashmir has very less population than Uttar Pradesh. Uttar Pradesh has till date only established 5,000 units. In these years we were able to establish 36,000 more units and successfully running. Less than 1% NPA. So that was a challenge and that's a success story. So can you tell me, अगर पेपर वर्क को इतना परफेक्ट होना ही है तो दे कैन डायरेक्टली ट्राई टू अवेल अ लोन फ्रॉम द बैंक, तो केवीआईबी बीच में किस तरह से उनको बेनिफिट देता है? You need a minority certificate, you need a proper project report from the consultant, you need Aadhaar linked mobile. These are the major 3 documents. They fail to get minority certificate, they don't want to go to Tehsildar and get the minority certificate. They don't go to the right person for the DPR. They just go to a random person who doesn't know how to make a project report. And project report is one major reason where banks cancel or reject their cases. Project report is the most important thing for getting your case sanctioned from the bank. Yes. KVIB can just approve, but since 2 years I have also made this circular that no unauthorized consultancy DPR will be approved, because then it piles on in the banks and it gets rejected. So we are doing check and balance at the first step only. People don't want to give the rent deed. If you have your own property, you're supposed to show the documents, revenue document. If you're taking a place on rent, at least you should have 3 years rent deed. And there people get stuck. And I think it is easier to avail 35% subsidy than going bank and take an upfront loan. There you're not getting any subsidy. There you're not getting any and major thing how people think like it's difficult.
when you are buying or for any manufacturing or any service sector, you're buying any instrument, any machinery, you have to produce GST bills. Yes. You just cannot produce random bills because that's fake. Yes. And that, as I said, on every step, there's a transparency, there's accountability. So none of these units are running just for the number's sake. On the portal of Jammu and Kashmir UT, on the portal of MSME Ministry, these are the units which are running successfully, and they have gone through all these documents. Few people. So you're saying the planning stage, वहाँ पे KVIB की बहुत help होती है, मतलब availing the DPR, availing the, getting all the documents right, and they can't do it on their own when they approach a bank, and most probably that will get rejected if they go directly to the bank. If the DPR is not proper, bank will definitely reject it. बहुत बड़ा तबका कश्मीर का was involved in wrong activities. You call it terrorism, you call it drug peddling. तो ये तबका, क्या इनमें awareness है कि KVIB किस तरह इनको income generation में help कर सकती है? Do they have the awareness? Are they availing these schemes? उन तक ये schemes पहुंच रही हैं? It's very difficult to filter who was right and who's wrong. But as I said, since 2 years, हम लोगों ने ये scheme urban areas में, especially downtown area. The thrust was going to the downtown area और वहाँ का जो youth है, देखिए जब आप रूरल एरिया में जाते हैं, जमीन भी है, गाय भी है, खेती भी है, चावल भी उगता है. If you go into the urban area like downtown, इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, नौकरियों पे ज्यादा डिपेंड करते हैं या स्मॉल स्किल, और इन स्मॉल स्किल जो काफी हद तक हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड नोन है, पेपरमैशी है, कार्पेट है, नमदा है, ये सारा अर्बन एरिया से आता है, कॉपर का काम है. इन्हीं लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरत थी. मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी खास स्कीम थी अर्बन एरियाज के लिए. तो जब आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं, तो आप डेफिनेटली गलत रास्ता ले लेते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जब आपका कारोबार है, एक यूथ समझता है कि मैंने लोन लिया है, मुझे चुकाना है, मुझे गलत एक्टिविटी में नहीं जाना है, जेल नहीं जाना है, सो ऑटोमेटिकली वो एक स्ट्रीम लाइन उस पे सही रास्ते पे. सो 2 साल से जो हमने अवेयरनेस अर्बन एरियाज में, पहली बार खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड या कोई ऐसा अवेयरनेस मायसूमा में हुआ, हबा कदल में हुआ, नवहटा में हुआ, जहां पे ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा. Yeah, these were the terrorism pockets in India. But they're very sensitive areas. Yes. And I was like, it was amazing to see the response. मतलब किस तरह से आपने awareness किया? We had gone there personally and लोगों को जमा करके, बिठा के, समझा के कि ये स्कीम है, आपके मन में जो भी एक्टिविटी है, जो भी करना चाहते हैं, आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं. And people, we have पहली बार जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में, अगर आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट देखते तो उसका रिकॉर्ड होता था 1, 10, 2, 20, इससे ज्यादा नहीं होता. Now you have 2,000 cases sanctioned in a year. And That's wonderful. And this year till date we have already got 650%. We have already hit the target. Okay. Every UT, every state, हर किसी जगह को टारगेट मिलता है. जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी जगह है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई टारगेट मुकम्मल नहीं किया है. जितने भी बच्चे, जितने भी यूथ यहाँ के काम करना चाहते हैं, करिए. मोस्ट वेलकम. We'll fund them. We'll give them all the assistance, hand-holding support. And पहली बार जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड श्रीनगर अर्बन एरिया में काम कर रही है, and वो खूबी कर रहे हैं. I am proud of, since working for a pretty long time in this department, जब मैं आई तो 5%, 10% महिलाओं का योगदान होता था, यूनिट्स होते थे. करते करते वो 20% तक पहुंचा, and this year it's 52%. माशाअल्लाह. And 52% means 14,000 units women are running. And that is 319 crore subsidy margin money we have given. Out of 803 crore, we are balancing. Yeah. We're giving that, जैसे हर जगह महिलाओं का कोटा. So I am trying to give them 50% quota. Okay, that's wonderful. And I'm looking forward कि और लड़कियां आगे आए और बेहतर काम करें. Absolutely. होगा. When people keep opening the units in
working towards it, working towards repayment of loans, and that's how debt कम होगा, GDP. जम्मू कश्मीर में काफी पढ़े लिखे लोग हैं. Literacy rate is like quite good. Yeah, but unfortunately employment was the issue. थे 2 brothers, एक सरकारी नौकरी JK बैंक में थे, एक HDFC बैंक में थे. एंड कोविड से पहले कुछ महीना पहले उन्होंने डेयरी फार्म जम्मू में सांबा में शुरू किया. एंड फाइनली वो इस नतीजे पे उन्होंने दोनों सरकारी नौकरियां छोड़ दी. एंड दे आर रनिंग इट एंड दे आर सप्लाइंग मिल्क, क्योंकि इनको मुनाफा ज्यादा है इसमें. एब्सोल्युटली. सो सेल्फ सस्टेनिंग, हमारे पीएम मोदी भी यही कहते हैं, सेल्फ सस्टेनर्स बनो एंड जॉब जनरेटर्स बनो rather than hunting for jobs at all times. That has been my slogan also. Don't hunt for job, be own big boss. Yes, absolutely. And that's the need of the day. लेकिन जाते जाते आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए कि आपके फादर लेट मोहम्मद शफी भट्ट साहब, he was an active member of NC नेशनल कॉन्फ्रेंस के. इनफैक्ट ही वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो आपसे तो यही उम्मीद की गई होगी कि उनके लेगेसी को टेक फॉरवर्ड करते हुए आप एनसी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन किया. क्या रीजन था जो आपने बीजेपी को चुना? My father, he always be my mentor, inspiration. But बचपन से जम्मू कश्मीर के हालात, उनका काम, जिनसे मैं इंस्पायर रही हूँ कि कैसे वो बिना खौफ, बिना मतलब के लोगों के लिए काम करते थे. फिर मेरा रुझान कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं गया. जिस तरीके से पार्टी की वर्कर्स के साथ या लॉयल्टी टुवर्ड्स द लॉयल पीपल, वो मुझे महसूस नहीं हुआ. एंड why I'm in BJP, the main reason is our honorable Prime Minister. उनकी सोच, the determination and the dedication towards anything, वो कुछ भी decide कर लेते हैं और कर ही लेते हैं. So change in Jammu and Kashmir was very important. बड़े होते हुए till my father was not too well when we decided not to be with National Conference. He was not too well and I decided, and he supported my decision. उन्होंने मेरे फैसले को बहुत सपोर्ट किया. एक चेंज था, बदलाव था पूरी कंट्री में बिकॉज ऑफ ऑनरेबल पीएम. एंड ये यकीन भी था कि जम्मू कश्मीर में बदलाव की जरूरत है. सैचुरेशन आ चुकी थी पॉलिटिक्स में भी और डेवलपमेंट में भी. एंड किसी न किसी को एक ऐसा स्टेप लेने की जरूरत होती है. I was the first Muslim woman to join in Jammu and Kashmir